Hello students, welcome back to my channel. In today's topic, we'll talk about the electricity, chapter electricity in physics, 9th chapter. As brief about electricity पढ़ेंगे, ठीक है? What is electricity? Without electricity, totally world will be dark in color, isn't it? सब अंधेरा हो जाता. Okay, उजाला जो है ना electricity से ही होता. Okay, beautiful buildings हैं या कई चीज़ जो डेकोरेट करते हैं हम लोग रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़रूरी है ना. इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन द इन फंक्शन हॉल हियर लाइक दैट हियर, इवन इन द हाउस व्हेन योर मम्मी cooking in the kitchen room, you know, heater are there, electric heaters are there, grinders is there, mixture is there. Okay, these are with the electricity. Tubes are there, bulbs are there. Okay, even your cell phones are there. Okay, many instruments, many gadgets are there which run through the electricity. So what is electricity actually? वो पढ़ेंगे हम, ठीक है. So it is a 9th chapter, electricity. ठीक है. ये इलेक्ट्रिसिटी को और एक नाम भी बोल सकते हो. ओके, अदर नेम आल्सो वी कैन गिव लाइक इलेक्ट्रॉन की सिटी, इलेक्ट्रॉन्स की सिटी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो ज़्यादा बातचीत करेंगे हम वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स ओनली द थिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल which give the, it is a charge one, okay, which give the current electricity, clear, to glow the bulb. Okay, many different types of electrical appliances, clear. So ये electricity actually है क्या, इसका definitions क्या है electricity का, वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है. what is electricity means actually, ठीक है. तो what is electricity, एक definition ले लो, छोटा सा definition, ठीक है. a small definition about the what is electricity. What is electricity? So the flow of charges, the flow of charges the flow of charges in a conductor, is defined, okay, is defined as electricity. Is defined as electricity. So what is electricity? इसका definition क्या है? The flow of charges, okay, in a conductor is defined as electricity. What is charge? What is conductor? ये भी define कर लेंगे, ठीक है, ताकि मालूम होना कि charge क्या है और conductor क्या है. What is the meaning of charge and what is the meaning of conductor? Clear? So in next point we'll study about the charge. Then what is charge? Charge आखिर बोलते किसको है? What is charge means? Clear? It is a fundamental. It is a fundamental particles. It is a fundamental particles in an atom. In an atom. In an atom, clear. Clear, these are the smallest, very very smallest particle present in an atom. So it may be positive or negative, okay. It may be positive charge, okay, or it may be negative charge, clear, positive or negative, okay. This both the charges here, ठीक है. ये कहाँ पे present है particles? ये atom में present है, and everything is made up of atoms only. Maybe it is a living thing or non living thing, they are made up of atoms. So in atom some basic particles are there, very 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 small particles are there. वो छोटे छोटे particles को क्या नाम देंगे? Okay, protons and neutrons. They are nothing but positive and negative, ठीक है. तो अभी इसमें कंडक्टर क्या है, यहाँ और एक वर्ड पढ़े थे ना हम, कंडक्टर. अभी चार्ज तो मालूम हो गया ना, what is charge means, you know, charge is nothing but it is a fundamental particle, basic particles in an atom. atom में जो basic particle present है उसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है ना. और कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दिस टू यू कैन गिव हियर. सो दैट आल्सो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स. Proton, these are the two tiny particles present in an atom. Now what is conductor then here? Conductor किसको बोलेंगे? ये कोई बस का कंडक्टर नहीं है भाई. Okay, so what is conductor?
ठीक है. In electricity, what is conductor means here? Okay, these conductors are the material or materials, you can tell, or substances which allow, okay, which allow electricity to flow from them, to flow through them, ठीक है. तो कंडक्टर क्या है यहाँ पे? कंडक्टर का मतलब क्या है? एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता, ठीक है. जैसा कि कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है. ओके, वायर मालूम है ना, वायर घर में बहुत देखे होंगे ना. ये वायर है, तो ये वायर में क्या है? ये वायर का क्या नाम देंगे यहाँ पे? कंडक्टर. इट इज सेड टू बी एज ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो वायर कनेक्शन लगाने के बाद ही चालू होते हैं. ओके, चलते हैं, है ना, वर्कआउट करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है. सो दैट वायर इज नथिंग बट ए कंडक्टर. सो इन दिस कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, electrons also will be there and protons also will be there. In the brief we'll study now. So this wire is a connection between your load means fan, bulb or whatever may be the electrical appliances. Okay, this wire is connected in a circuit. Okay, so this wire is said to be as a conductor. कंडक्टर मतलब क्या है? एक वायर है, एक सोर्स है थ्रू विच क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता, चलता हूँ. तो ये वायर का नाम क्या रखेंगे यहाँ पे? कंडक्टर. Okay, it may be copper, aluminum, silver, many are there. Many examples are there about the conductors here. Clear? तो example भी लिख लो बाजू. What are the good examples of this conductor? You know, okay, copper is there. Copper is a good example. Copper is there. Aluminum is there. Aluminum is there, and gold is there. Okay, and silver is there, etc. Okay, number of metals are there here. That metal wire, okay, it is said to be as a conductor which conduct the electricity particles through them. इसके थ्रू वो पार्टिकल्स मूव होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ये मूव होते हैं, ठीक है. तो इसमें मूव होने वाले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना. सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखेंगे कहीं भी, इलेक्ट्रॉन्स अगर मेंशन करेंगे यहाँ पे, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स चार्ज विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ये याद रख लो. इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ई, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव देयर. क्लियर? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, चार्ज को, एक्चुअली चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं यहाँ पे? इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू, कैपिटल लेटर क्यू. इससे डिनोट करते हैं कोई भी चार्ज अगर है यहाँ पे, ठीक है. सो ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया. देन प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ये भी चार्ज है लेकिन इट इज ए पॉजिटिव वन. इट इज ए पॉजिटिव. क्लियर? इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. इज ए पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन. सो पी इसको प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव. ओके, बोथ आर द चार्ज पार्टिकल. दोनों को भी क्या नाम दिया यहाँ पे? चार्ज पार्टिकल. बोथ आर कॉल्ड एज चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर? एंड बोथ आर डिनोटेड बाय लेटर क्यू. Clear? Both are denoted by letter Q here. Clear? Next one. Next point you can write. Okay. The rate of flow of charge. Clear? The rate of flow of charge in an conductor, or electric circuit, you can tell. Electric circuit. Okay, electric circuit is said to be as, or is called electric current. What is it called? Electric current. And how it is denoted? You know, electric current is denoted by capital letter I or small letter I. Okay, clear?
So the rate of flow of charge in an electric circuit, okay, is called as electric current, and electric current is denoted by letter I. Clear? Now the next one, electric circuit will tell. What is electric circuit means? Here we have used one word, electric circuit. इसका मतलब क्या है? Electric circuit का मतलब क्या है? ठीक है? What is the meaning of electric circuit? Electric circuit. So what is electric circuit here? The way or the path, okay, the path for transmitting okay, the way or the path with transmitting electric current. Electric current. Okay, current is known as electric circuit. Clear? So how it will transfer, you know, एक छोटा एग्जांपल भी दे देंगे आप. कैसा होता है यहाँ पे बैटरी के थ्रू होता है ना. बैटरी मालूम है ना सबको, व्हाट इज़ बैटरी. ठीक है, बैटरी अगर ऑन कर दिए तो ये करंट मूव हो रहा है यहाँ पे. ठीक है ना, करंट इज मूविंग है ना. ओके, ये मूव होते होते कहाँ पे जा रहा है? लोड को जा रहा है. लोड क्या है यहाँ पे? एग्जांपल लैम्प. लैम्प इज द लोड. लैम्प, बल्ब, ओके, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, ये जो वायर यहाँ पे जा रहा है ना वो कंडक्टर है. ओके, वायर इज नथिंग बट ए कंडक्टर. दिस वायर इज सेट टू बी एज ए कंडक्टर. ठीक है, तो ये बैटरी है, यहाँ से ऑन जैसा कर दे, यहाँ से चले जाएंगे, फिर यहाँ से भी रिटर्न आएंगे. ये एक सर्क्यूट है completely. Clear? It is called one circuit here. So here this is the important point now. The number of charge, the number of charge, the number of charge. What is charge means, you know? Electrons. Remember always, charge is nothing but electrons. Nothing but electrons. ठीक है, the number of charge, that is electrons which drift. Okay, which drift from higher to lower. From higher to lower potential is called quantity of charge. Clear? Quantity of charge. Clear? So what is the meaning of this sentence? You know, the number of charge, number of electrons which drift, which are moving, okay, which are moving from the higher concentration or from the higher area to lower potential, okay, is called the quantity of charge. How many quantity of electrons are moving, in which direction they are moving. Okay, here you can mention that which represent, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, which represents the total amount of electricity, which flow through a conductor. Conductor क्या है यहाँ पे? वायर है ना. What is conductor means here? वायर. Okay, conductor is nothing but a wire. Okay, and denoted by the letter okay, which letter? Q. Okay, already here we written. Okay, electrons charge. Okay, charge is denoted by Q. Clear? So the number of charge, number of electrons which drift, which move from higher to lower potential is called the quantity of charge. Potential is the externally giving the energy, force to it. It is said to be as a potential. Okay, energy. Clear? So what does it mean, you know? Which represent the total amount of electricity. कितनी electricity? 1.5 volt, 2.5 volt, 10 volts, 100 volts. बल्ब पे लिखा हुआ था ना 100 volts रहता, कोई बल्ब 100 volts, 2000 volts, 100 volt, 10 volts, 0 volts. ठीक है, that volts, voltage,
Okay, it is amount of electricity, okay, which flow through the conductor क्या है, वायर. जहाँ पे अपन स्विच ऑन करते हैं ना, वहाँ से वायर शुरू होके बल्ब तक जा रहा. From where we are on, just on the switch here, no, from here the wire connection will be there here to the bulb, electrical appliances. Then from here once again back it comes back. It is a circuit, totally one circuit, you know. So the conductor takes the charge, you know, and this conductor or the charge here denoted by Q. Clear? Next one. Okay, the next one, this is once again important one, you know, the electric charge. The electric charge is measured in coulombs. ये एक measurement unit है. What is coulombs means, you know, it is a measurement unit. Okay, it is a measurement unit. Okay, and coulombs denoted by capital letter C. ठीक है ना, coulombs. Clear? This coulomb is nothing but it is a standard unit of electric charge. Clear? It is a standing unit of electric charge in the international system of SI. Clear? Standard unit. In SI unit, ये बाजू लिख सकते हैं आप. In SI unit, it is called as coulombs. Clear? So listen carefully. The electric charge is measured in coulombs. Coulombs एक measurement unit है. ठीक है ना? In SI system में, international system में उसको coulombs बोलते हैं. ठीक है ना? Next. Then charge. Okay. Charge on 6.25. Okay, this one is very important. Charge on 6.25 into 10 to the power of 18. Okay, 10 to the power of 18 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 into 10 to the power of 18. When you multiply certain numbers, you will get that many electrons is equal to, इतने इलेक्ट्रॉन्स is equal to 1 coulomb. Equal to 1 coulomb. C denoted as a coulomb. Okay, यहाँ भूलना नहीं, coulomb. Coulomb. Clear? So what is 1 coulomb? Okay, what is the value of 1 coulomb means? What do you have to tell you now? Charge. How much charge? 6.25 into 10 to the power of 18 electrons makes 1 coulomb. ठीक है ना? Therefore, next point you can write. Okay, therefore the charge on 1 electron. Charge on 1 electron. 1 electron is equal to 1 by, okay, this is the equation of 1 by 6.25 into 10 to the power of 18. Okay, 18 coulombs. Okay, which is equal to, ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई अपन कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? 1.6 into 10 to the power of minus 19. 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. C for coulombs. Don't forget this one. coulombs. ठीक है ना? तो एक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मालूम करना है तो ये उसका फॉर्मूला है 1 by 6.25 into 10 to the power of 18. ओके, इक्वल टू कितने वैल्यू मिलेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन करके लेंगे तो आपका आंसर ही आएगा 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Clear? So okay, so the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. What is charge means here? Electron. Don't forget, you know. Okay, rate of flow of charge. तो इसको क्या लिखेंगे? अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? I is equal to Q by T. ठीक है ना? ये फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है? I equal to Q by T. So here we can write what is I means then here. I किसको बोलेंगे यहाँ पे? What is I means here? I is nothing but current. Clear? I is current, you know. And what is Q? What is Q means, you know? Q is nothing but charge. Charge. ये पढ़े थे ना? Clear? And what is T? T means what, you know? T means time.
Clear? So I equal to Q by T. That is I nothing but current. Current is equal to charge by time. Clear? Understood here now? Charge by time. Clear? ये values important है, numericals करने के लिए काम आते हैं. When we do the problems, numericals, based on the electricity, some problems also given, numericals are given. So for that, these values are important. These derivations are important. Clear? So later I'll show that also. Clear? So next one. Okay, this remember it. Clear? The rate of flow of charge means what you'll write the formula, I equal to Q by T. What is I indicate here? Current. What is Q means here? Charge. What is T means here? Time. Okay. Is the time here. Still, next one. Next one is electric circuit. Next is the electric. What is the electric circuit means now? This we'll study now. अभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम यहाँ भी पढ़े ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. सो एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे. तो उसमें एक रफली एक डायग्राम से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है. सपोज ये एक डायग्राम, can you see the diagram? Okay, I am drawing this circuit, ठीक है ना. Then here we can keep one instrument here which is called as the ammeter. Okay, here we'll keep the key, switch key. Clear? And here the battery. Here we are keeping the battery here. And this one is the rheostat. Clear? Now here we'll keep another instrument. Clear? And what is the instrument called as, voltmeter. Clear? Voltmeter we'll keep here. Charges we have to show here, positive or negative. Clear? This one is a positive, this is the negative, this is the battery. Clear? Now from where the positive is there, कहाँ जहाँ पे positive है ना, वहीं से current move होता. Current move ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है ना. Movement of current is like this. Clear? Voltmeter जो है ना वो parallel कनेक्शन दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. एमीटर क्या है? करंट, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा नहीं पूरा मालूम करता, रीडिंग बताता. एमीटर में करंट एक नीडल रहता, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता. द मूवमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन एमीटर शोज दैट यस करंट इज मूविंग लाइक दिस. बट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ करंट इज मूविंग, वोल्टमीटर विल शो. क्वांटिटी कितना वोल्टेज मूव हो रहा, 1.5 हो रहा, 2.5 हो रहा, 3.5 हो रहा, कितना वोल्टेज मूव रहा, क्वांटिटी कितना करंट का, दैट द वोल्टमीटर विल शो. ओके, वोल्टमीटर अंडरस्टूड. सो हियर वी कैन कीप वन बल्ब आल्सो. लोड, एक छोटा सा लोड यहाँ पे हम लगा दें, एक बल्ब लगा दें यहाँ पे, ठीक है ना, एक बल्ब, ठीक है, यहाँ एक बल्ब लगा दें, ठीक है ना. व्हेन यू ऑन द स्विच हियर ना, स्विच जैसा भी ऑन कर दिए, ये क्या है, ये स्विच की है, इसको लिख सकते, ये स्विच की है यहाँ पे, ठीक है. ये ए का मतलब क्या है, एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है. ये रियोस्टेट है. रियोस्टेट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो ये कंट्रोल करता, उसको रोकता. जितनी बल्ब को ज़रूरत है करंट वही देता वहाँ पे. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट विल बी स्टॉप हियर ओनली. इट कैन बी मैनेज इन रियोस्टेट. Okay, in our homes also, big meters will be there. Have you seen? There one switches will be there. Many switches will be there. So current is coming from directly from the pole to our houses. So in our home, whatever the electrical appliances are there, depending on that, how much current is used, that much current only is passed because of that circuits, because of that switches. So the rheostat is that. Okay, it manages the current. Okay, control the current here. Clear? What is the bulb means? Load. Bulb is nothing but otherwise called as a लोड. इसको लोड बोल सकते हैं, ठीक है. ये वोल्टमीटर, कितना क्वांटिटी मूव हो रहा ये सर्किट में, वो वोल्टमीटर बता. अब ये पूरा सर्किट हुआ नहीं, देखो ये कंप्लीट सर्किट हो गया. एक बार स्विच ऑन कर दिए तो करंट मूव हो रहा, कंटिन्यूस करंट मूव हो रहा. वाइल मूविंग व्हाट हैपेंड, द बल्ब आल्सो इज ऑन, ठीक है. बल्ब ऑन हो गया, अब कंटिन्यूसली मूव हो रहा. स्विच ऑफ कर दो, बल्ब भी चले जाता. क्लियर? वंस यू ऑन द स्विच, द करंट इज मूव. करंट वेयर, फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड वेयर द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग, फ्रॉम द पॉजिटिव. बैटरी में देखते ना, सपोज ये ड्यूरासेल है,
ठीक है। ये ड्यूरासेल बैटरी तो देखे हम, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा रहता ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इमेजिन करो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये शेल के ऊपर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे पॉजिटिव। check the shell properly, it will be written here positive and negative. So from where the positive is written, from there only the electrons move, चार्ज मूव होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा, यहाँ से रहा हूँ, इट मेक ए सर्कल, ओके। ये सारे चीज़ को सर्किट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सर्किट का मतलब कंप्लीटली क्लियर। तो यहाँ पे एमीटर एंड वोल्ट मीटर के डेफिनेशन भी लिख लो, दो मार्क्स में आ जाएंगे, ओके। द डेफिनेशन व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर, clear. So for that you can write the definition also, clear. So what is ammeter, clear? What is ammeter means? So it is an instrument, it is a instrument, it is an instrument to measure the current, to measure the current in a circuit, clear. What the ammeter is doing, you know, it is helping to measure, okay, it help to measure the current in circuit. What the work of ammeter, you know, is measuring the current, कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, ये मालूम करता है एमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, ओके, वोल्ट मीटर, okay, volt meter, ठीक है। what is voltmeter here? It is an instrument, it is an instrument used to measure the quantity, okay, quantity of electricity, the quantity of इलेक्ट्रिसिटी कितना क्वांटिटी में हो रहा, 1.5 वोल्ट है वोल्टेज, ठीक है। 1.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट और 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट्स, what is the quantity of electricity is moving in this circuit, it is measured in this instrument, okay. Another instrument name here, voltmeter, okay. Then rheostat also we have written here, so write the definition of rheostat also. Rheostat. So what is the rheostat means here? It is a, okay, it is a electrical component, it is a electrical component to regulate, okay, to regulate the flow of current in a circuit, in a सर्किट, क्लियर। सो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेस्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हें मेंटेन करता करंट को, ठीक है। सपोज 0 वोल्ट बल्ब है, सपोज इमेजिन दिस बल्ब इज a 0 वोल्ट, if you are supplying nearly 10 volts current to it, the bulb will burst, clear, understood, you know. So depend upon the bulb, depend upon the how many watts, कितने वॉट का बल्ब है, उतना ही करंट इन्हें सप्लाई करता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड रियोस्टेट, क्लियर, अंडरस्टूड दिस वन हियर। ये डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के डेफिनेशन है, व्हाट इज एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, ओके। दिस डायग्राम आल्सो कैरीज 4 मार्क्स, ओके। ड्रॉ द डायग्राम पे सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सो दिस इज द डायग्राम, ओके। पेन से नहीं होता ना, पेंसिल से होता है ना, अच्छा सा पेंसिल से होता है ना, उसमें वोल्ट मीटर हमेशा याद रखो, पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा सकते हैं, सीरीज में नहीं। सीरीज वी हैव टू कीप ओनली वन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज एमीटर, बट इन पैरेलल वी कैन अरेंज द वोल्ट मीटर हियर नाउ, क्लियर, clear. Next one, next one you can tell types of materials now, कौन से material use कर रहे electricity में, what type of materials we are using in electricity, clear. Charge carriers otherwise called as, clear. So next one, types of materials, so types of materials here nothing but a charge carriers, उसका क्या नाम दिया यहाँ पे, चार्ज कैरियर्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो भी है वो कैरियर्स क्या है,
वायर्स है, ओके, अल्युमिनियम वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, ओके, आयरन वायर, ओके, मेनी वायर्स आर देयर, मेटालिक वायर, ओके, टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल कैसा यूज़ करना है वो बताएंगे, पर वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. सो इन दैट फर्स्ट वन इज द कंडक्टर्स. कंडक्टर तो मालूम है ना, वायर को ही कंडक्टर बोलते हैं. सो कंडक्टर इज नथिंग बट ए वायर. Okay, what does the conductor means here? Wire. So what you will write about here? The substance which allow, about conductor, okay, the substance which allow current, which allows current to flow through them easily. Okay, are called conductors. 2 mark answer. Clear? What are conductors? Conductors किसको बोलते हैं? Conductors क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होना है उसको कंडक्टर बोलते हैं. कोई भी वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये एक अल्युमिनियम वायर है, ठीक है, ये अल्युमिनियम वायर में करंट पास हो रहा, 2 सर्किट में कनेक्ट कर दिए हम, तो यहाँ से करंट पास हो, यहाँ से ये एंड से ये एंड तक करंट पास हो रहा. सो ये क्या है? पूरा कंडक्टर. ये वायर का नाम क्या रखेंगे? कंडक्टर. वायर में देखिए आप ऊपर रबर लगा हुआ था, ओके, विद द प्लास्टिक और द रबर, वो इंसुलेटर बोलते हैं इसको. इट इज़ कॉल्ड एज ए इंसुलेटर. हम वायर को टच भी करें तो यू विल नॉट गेट एनी शॉक फॉर दैट, बिकॉज वायर इज इनसाइड. एक्चुअली वायर इज ओरिजिनल वायर इज इनसाइड. Clear? Suppose if anything is broken here now, if you touch it, then you will get the shock. But it will not be broken. It is an insulated one. Insulators, they're called as insulator. Anyhow, what are the conductors means here now? Meaning of conductors means the substance which allow the current to flow through easily. Allow the current to flow easily. That is, they are called as the conductors here. Clear? And example लिख दो यहाँ पे. क्या है example यहाँ पे? ठीक है, कौन से conductors है? तकरीबन all metals. Okay, all metals you can tell. ठीक है, एग्जाम्पल था all metals, such as, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दो. some examples you can write here, such as copper. Okay, copper you can take, and aluminum is there. Okay, aluminum is there. Silver. Okay, gold. ओके, गोल्ड आल्सो बोलिए, गोल्ड एक्सेट्रा. ठीक है, गोल्ड के वायरिंग अगर घर में करें तो फिर चोर तो अलमारी को देखेंगे नहीं, वायरिंग लेके चलेंगे नहीं. सो नोबडी विल यूज द गोल्ड, बट एक्चुअली गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर. ओके, द करंट कैन ईजिली पास थ्रू द गोल्ड, सिल्वर, अल्युमिनियम, प्लैटिनम, many are there, many materials are there which can easily pass the current, easily pass the charges. Clear? These are some of the examples. So we can tell that it is a active charge carriers. ये सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे? एक नाम दिया वहाँ पे उन्हें. दे आर कॉल्ड एज एक्टिव, दे आर कॉल्ड एज एक्टिव चार्ज carriers. Clear? Which one? Copper, aluminum, silver, gold, platinum, many metals are there. They are called as the active charge carrier, जिसमें करंट easily flow हो सकता, उसको बोलते हैं active charge carriers. Nothing but charge is nothing but electrons, always remember. And what we are talking about metals, they are called the conductors. ये aluminum और copper, silver, gold जो बोले, ये conductors है. इसके वायर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करें ना, वो वायर को क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर. दिस वायर इज सेड टू बी एज अ कंडक्टर्स. क्लियर? ये थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे. ठीक है, अभी इसके इंसुलेटर. देन व्हाट इज इंसुलेटर मीन्स? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंसुलेटर. अभी बताया ना व्हाट इज इंसुलेटर, फिर एक बार का डेफिनेशन भी लिख लो. ठीक है, व्हाट इज इंसुलेटर्स. So what is insulator here? The substance or the substances which do not allow current to flow, okay, through them. ठीक है ना? they are called as, they are known as insulator. क्लियर? इंसुलेटर क्या है यहाँ पे? विच विल नॉट अलाउ द करंट टू पास. चार्ज उसमें पास ही नहीं होता. अब जैसे प्लास्टिक का पेन है,
यहाँ पे मैं करंट लगा दूँ, इधर भी एक करंट लगा के बल्ब बीच में रख दिया लोड, बल्ब ग्लो ही नहीं होता. Okay, the bulb will not get any charge at all because the plastic one. If I keep the rubber here, then also it will not pass here. But if I keep the wire here made up of metals, aluminum, silver, copper, gold, then the current easily pass here. Clear? So all the insulators which are, they do not allow current flow through them. So they are called as insulator. And so examples also you can write here. What are the examples? Examples of insulator. So what are the example of insulator? Plastic. All the plastic things. Okay, plastics are there, rubber is there. Okay, rubber is there, wood is there, wood, etc. बहुत सारी चीज़ें. Clear? So they are called as bad conductor of electricity. What they call as here? Bad conductors. इनको क्या बोलेंगे? Bad conductor. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा, इसलिए इसका नाम क्या दिया? Bad conductor of electricity. वही अगर कॉपर रहेंगे, मेटल वायर्स रहेंगे, कॉपर है, अल्मोनियम है, सिल्वर है, देन दिस मेटल्स आर कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज चार्ज कैन ईजिली मूव इन दिस वायर्स. ओके, wire of copper, wire of aluminum, gold, silver, etc. In this wire, the charge can easily move. So they are called as the active charge carrier, or simply called as the good conductors of electricity. And these are the bad conductors because electricity do not pass through this wire, or the rubber, plastic, wood, etc. Then okay, they will not pass it all here. Okay. Now next one, some important here, like electrons present in metals. Electron present in metals. Listen, this is a very important point. Okay, metals or free electrons. They are called as free electrons. Free electrons. Clear? Electrons which are present in metals. कौन से metals हैं? Copper है, aluminum है, silver है, gold है, platinum है, metal wires. Okay, in metal wires, example, these are all the metal wires. Here the electrons are free electrons. They can easily move. Okay, they are free, clear, they can easily move. So this point is very important. Electrons present in metals are free electrons. What they call as, free electrons. And one more the important point here, valence electrons. Okay, valence electrons. Electrons are always free electrons. Free electrons. Chris, valence electron क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में पढ़े ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, ऑर्बिट्स याद है जो ऑर्बिट समझाया था मैं, KLMN, SPDF. आई थिंक यू रिमेंबर दिस वन हियर. सो लास्ट वन KLMN, N लास्ट वन. N ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने ऑर्बिट्स यहाँ पे? KLMN. ये N में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन outermost ऑर्बिट, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट दे कॉल्ड एज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो स्मॉल सर्किट का डायग्राम भी बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है? एक छोटा सा सर्किट फिर एक बार देख लो सर्किट का डायग्राम यहाँ पे, ठीक है? एक छोटा सर्किट यहाँ पे, ठीक है? इजी. यहाँ पे बल्ब क्या है? यहाँ पे लोड है. बल्ब इज नथिंग बट ए लोड. दिस बल्ब इज नथिंग बट ए लोड. इट इज कॉल्ड एज लोड. बल्ब है या फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पे वो है, ठीक है? यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम? यहाँ पे बैटरी रख दे रहे हैं. यहाँ पे एक बैटरी भी केप्ट हियर. यहाँ पे क्या रखे? एक स्विच की है यहाँ पे, ठीक है? ये क्या है? कंडक्टर है. कंडक्टर इज नथिंग बट ए वायर. वायर इज कॉल्ड एज ए कंडक्टर. ये सारी चीज़ क्या है? सपोज एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करंट यहाँ से मूव हो रहा, ठीक है? जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ से करंट मूव होगा, ठीक है? ये रिमेंबर करना, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. क्लियर? स्विच ऑन करते ही क्या होता है? जहाँ पे पॉजिटिव है शेल में वहाँ से मूव होता, ठीक है? बैटरी, छोटी बैटरी शेल देखे होंगे ना, शेल, बैटरी शेल, वहाँ पे लिखा हुआ रहता, ठीक है ना? उसमें मूव होता है. जैसे स्विच ऑन कर दिया वहाँ पे तो मूव होता है. जैसा एग्जांपल ये देखो, ड्यूरासेल
ठीक है, एक बैटरी है, यहाँ पे है ना चार्ज पार्टिकल, इस पर लिखा हुआ भी रहता है यहाँ पे पॉजिटिव, कैन यू सी हियर, दिस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, ये साइड क्या है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, और इसका वोल्ट भी लिखा हुआ है देखो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इसमें कितना चार्ज है, ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, एनर्जी इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो ये स्विच ऑन करने से ये इस तरफ पॉजिटिव है ना, तो करंट यहाँ से मूव हो रहा, और जैसा करंट इसमें से मूव हो रहा, यहाँ से मूव होकर बाहर आ गया, यहाँ बल्ब ऑन हो गया, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताया भी, मैं आई हैव शोन हाउ द बल्ब ऑन व्हेन यू attach this all battery and everything, you know, working of AC/DC at the time. In one of my video I have shown this whole thing, clear. So this is the small circuit, the example of a circuit. This complete is called as the circuit, clear. Next one once again important topic now, okay. What is electrical resistance now, okay. What is electrical resistance? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन लिख लो, 2 मार्क्स में आता, ओके। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सो व्हाट यू राइट हियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, resistance is defined, okay, is defined as the property of a conductor, okay, a conductor, ये important है यहाँ पे, ठीक है ना। Resistance is defined, what is resistance means, you know, it is defined as a property of a conductor, okay, to resist the flow of charge through it, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर क्या बोले हम, वायर, ये वायर है कंडक्टर, ये सारा कंडक्टर है, कंडक्टर टू रेसिस्ट टू फ्लो, रेसिस्ट का मतलब कि कंडक्टर की क्या अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स अदरवाइज कॉल है चार्ज, ठीक है ना। ये चार्ज मूव हो रहा है, ये वायर में मूव हो रहा है, और वायर का नाम क्या दिया हम, कंडक्टर, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या दिया अपन, चार्ज। So together is said to be as electrical resistance. Clear? I think clear. What is electrical resistance? You know, the resistance is defined as a property of a conductor. Property of a conductor to resist the flow of charge through it. कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है, उसके ऊपर डिपेंड है कितने चार्ज उसमें मूव होता. Okay, depending upon the length, width of the wire, the charge also will move in that. Later we'll study about that also. Clear? So hope you understood this one. Electrical resistance is what? Clear? Next one. Next one. In metals, the charge carriers are called what are they called? Electrons. क्या नाम दिए वहाँ पे इसको? इलेक्ट्रॉन्स. इन मेटल्स क्या है? वायर. मेटल्स यूज़ करें वायर कंडक्टर्स के लिए, ठीक है. इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो यहाँ पे एक दो डायग्राम बता देंगे. छोटा सा मेटल, एक वायर उतार देंगे तो वहाँ पे, ठीक है. एक वायर, छोटा सा वायर यहाँ पे, ठीक है. ये एक वायर है. इमेजिन करो एक छोटा सा वायर है, ठीक है. वायर इतना मोटा नहीं रहता, वायर है. एक वायर ले लिया हम यहाँ पे, ठीक है. ये वायर का डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. ये एक वायर है और एक वायर है. 2 वायर्स वी हैव टेकिंग. ठीक है. हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस कंडक्टर्स आई विल शो यू. क्लियर? बोथ आर द वायर्स. दिस बोथ आर नथिंग बट वायर्स. दिस इज आल्सो वायर and this is also wire. What are the wire otherwise called as? What I told you, conductors. Wires otherwise called as conductors. वायर का और एक नाम क्या है यहाँ पे? कंडक्टर्स. क्या कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे उन्हें? किसको लेके जा रहा? चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स.
करंट, क्लियर। सो यहाँ पे बताऊंगा 2 ट्यूब यहाँ पे। सो ये एक वायर है, ठीक है, एक छोटा सा वायर है, इमेजिन करो ये वायर है, ये ट्यूब, छोटा सा ट्यूब, ये वायर है, ये भी एक ट्यूब है, छोटा वायर, वायर मालूम है ना, वायर, वायर, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, छोटा वायर है, छोटा सा वायर, ये उसका विड्थ है, ये उसका लेंथ है वायर का, ठीक है, विड्थ एंड द लेंथ ऑफ ए वायर, 2 वायर्स, वायर्स आर नथिंग बट ए कंडक्टर्स, clear. Now here plus sign, what I am showing the plus sign, this plus signs are nothing but okay, example ये वायर है, ये छोटा सा वायर है, ठीक है, एक वायर है, कंडक्टर, एग्जाम्पल ऑफ ए कंडक्टर, ये वायर है, अल्युमिनियम वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये वायर को मैं जूम करके यहाँ पे उतार दिया, बड़ा उतार दिया, ठीक है, ये छोटा वायर को जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अभी जो पॉजिटिव साइन यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, ये प्रोटॉन्स है, क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको, प्रोटॉन्स है, वायर में ऐसे प्रोटॉन्स फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होते प्रोटॉन्स, ओके, दे विल बी फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, ये सारे प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन। कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, वी कांट से, ओके। सो एक इमेजिनेशन, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, ये सारे प्रोटॉन्स हैं, क्लियर, देर ऑल द प्रोटॉन्स हियर इन बोथ द ट्यूब हियर। नाउ सी द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, सपोज दिस डॉट्स, दिस द इलेक्ट्रॉन, ये इधर मूव हो रहा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से इस तरफ मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से इस तरफ मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इधर मूव हो रहा, ओके, डायरेक्शन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ इधर मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उन्हें इधर मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहाँ पे मूव हो रहा, डायरेक्शन रैंडमली है ना, दे आर नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट ऑल, ओके, दे आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, क्लियर। सो हियर यू कैन राइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स in this tube, in this conductor, what do you write, free electrons, okay, free electrons, E is nothing but an electron, keep the negative sign, free electrons moving, okay, moving randomly in a conductor, clear। now here, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव हो रहा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव हो रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव हो रहा, यहाँ पे मूव हो रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव हो रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है, what the difference you finding in these 2 tubes, in both the conductors, here it is moving randomly, but see here they are moving in a straight line, okay, all the electrons are moving in a straight line. When they are moving, when this conductor is attached, okay, when it is connected, it is connected to a battery, जब ये कनेक्ट हो गया बैटरी में, okay, then it is moving. So what do you write, free electron, free थे ना, पहले तो फ्री थे वो लोग, ठीक है, लेकिन बाद में ड्रिफ्ट हो गया वो लोग, मूव हो रहे हैं, ओके, ड्रिफ्ट in one direction in a conductor, clear। when they are moving, when we are attached this conductor to a battery को अटैच कर दिया यहाँ पे, ये कंडक्टर वायर बैटरी को यहाँ पे अटैच कर दिया, बैटरी को जैसा अटैच करे क्या हुआ, एनर्जी मूव हो रहा ना, ओके, isn't it, potential increases, potential difference increases, so electrons are moving, when the positive charge, here it is a positive, here it is a negative, so when we attach the battery to it, यहाँ पे बैटरी लगा दिया मैं, यहाँ पे ऑन कर दिया, चार्ज दे दिया, तो अभी पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ है, सो द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, ओके। ये वायर में ये कंडक्टर्स क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स विल मूव स्ट्रेट इन लाइन, दे विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन नाउ, नॉट रैंडमली, बट protons will never move, protons are fixed at one place, protons will never move, but only electrons can move, electrons either charge carriers, वही तो पढ़े ना हम, शुरू से वही पढ़ते आ रहे कि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच आर मूविंग इन ए सर्किट, विच आर मूविंग इन ए कंडक्टर्स, सो दिस आर 2 आर द कंडक्टर्स, क्लियर, दिस 2 आर द कंडक्टर्स। ये क्या है, कंडक्टर्स क्या है, वायर है, ओके, ये 2 वायर है, यहाँ पे एक वायर रखे अपन, यहाँ पे एक वायर रखे, ये वायर को जब जूम करेंगे तो इतना बड़ा बना है वायर को, वायर के अंदर बिना चार्ज के, बिना इसको बैटरी लगाए, बिना कोई चार्ज दिए, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, जहाँ जो डायरेक्शन चाहे इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव,
with, because here we are not connected to a battery, here we are not giving any potential difference, we are not giving any extra charges to it. Okay, external force or external energy we are not applying to it on this conductor, so electrons can move wherever it want. But here, see, in this conductor here, here we are giving the charge to it, battery is here, now we are giving to charge it. So आफ्टर गिविंग द चार्ज, एक बार चार्ज दे दिए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 4 मार्क के लिए आ सकता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो व्हाट द फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, यू नो, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ electron electron always with E and negative on it, sign on it, clear. In a conductor or in random motion or in random motion, okay. कब रैंडम मोशन में रहता है, व्हेन इट इज इन रैंडम मोशन, इन एब्सेंस ऑफ, ओके, इन एब्सेंस ऑफ potential difference, in absence of potential difference. इसके एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो चाहे डायरेक्शन में मूव हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी पोटेंशियल डिफरेंस to this wire, to this conductor at all here, so the electrons are free, wherever they want they can move, जहाँ चाहे उनका डायरेक्शन बन सकता, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते, इसके बारे में लिखा मैं फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेकंड वन यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट वाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और differs, you can tell, differs while traveling from one terminal to another terminal to another terminal, one terminal to अनदर टर्मिनल। टर्मिनल किसको बोलेंगे, ये एंड पार्ट को, ये है टर्मिनल, यहाँ है टर्मिनल ए बी, ये टर्मिनल लास्ट एंडिंग यहाँ पे, ये वायर है ना, ये उसका एक टर्मिनल है, ये उसका टर्मिनल, एंड, टू एंड्स, ये एक एंड है, ये एक एंड है, ए बी, ये दो एंड्स है, इसको बोलेंगे टर्मिनल, दिस कॉल्ड एज द टर्मिनल, एंड पार्ट ऑफ द वायर, एंड पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एज द टर्मिनल्स, क्लियर। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफर्स वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने के लिए उनकी वेलोसिटी अलग अलग, स्पीड अलग अलग है, ओके, स्पीड इन लोगों की अलग अलग रहती है, इट डिफर्स, दैट्स द पॉइंट यू कैन गिव इट। फाइनली थर्ड पॉइंट आल्सो यू कैन राइट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट हियर, एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज velocity of electrons, clear, are known as drift velocity, drift velocity, ठीक है। व्हाट इज ड्रिफ्ट मीन्स, ना मूवमेंट, ओके, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे कंडक्टर में, एट व्हाट स्पीड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए कंडक्टर, इन ए वायर, कंडक्टर इज नथिंग बट ए वायर, कंडक्टर मतलब दिमाग में ये बिठा लो कि वो क्या है, वायर, ओके, वायर कौन सा है, मेड अप ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स आर देयर, ओके, ये एक छोटा सा मेटल, अल्युमिनियम मेटल, ये कंडक्टर, ठीक है ना। तो मूवमेंट, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या रखे हम, चार्ज, कितनी स्पीड से चार्ज मूवमेंट हो रहे तो उसका नाम एक रखे, क्या रखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से जो मूवमेंट होगा कंडक्टर में, दैट इज सेड टू बी एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है, वन वर्ड आई हैव यूज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ विल स्टडी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। पोटेंशियल
what is potential difference means? Clear? This potential difference is denoted by letter V. लेटर बी से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है ना. एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference between two points in an electric circuit, okay, is in electric circuit, okay, and can continue in as the work done to move unit electrical charge, to move unit electrical charge from one point to another in a electric circuit, clear. So what is potential difference भी है ना, किसको बोलेंगे potential difference? A difference between the 2 points, यहाँ पे चार्ज लगा दिया, ये कंडक्टर है, यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दिया. सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ से ये घूम के आ जाएगा तो एक सर्किट बन गया वहाँ पे, ये सर्किट में. तो यहाँ पे मैं कितना वोल्ट दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रहा हूँ, 1.5 वोल्टेज, ये इसका डिफरेंस है. ये जितना मैं यहाँ पे वोल्ट दूंगा उतना डिफरेंस आएगा, उतनी स्पीड से करंट जाएगा, है ना. तो डिपेंड अपॉन द बैटरी, डिपेंड अपॉन द सेल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? ए पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 points, first point and second point in a circuit, first point to second point in a circuit as the work done. ओके, एक वर्क डन हो गया ना, यहाँ से यहाँ जाके आए तक. अगर यहाँ पे बल्ब हम रख दिया तो ग्लो हो जाएगा, बल्ब तो चालू हो गया. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखे, यहाँ पे फैन है, कोई भी एक लोड ऑन हो गया, वो इट विल बी ऑन व्हेन द करंट इज पास हियर. क्लियर? सो इन अ सर्किट टू मूव यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक यूनिट जैसा मूव हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, that electrical charges from one point to another point in electric circuit is said to be as a potential difference. Next, potential difference का formula भी है, एक छोटा सा formula है. So we can write potential difference is equal to work done by charge. कितना वर्क हुआ, ओके, किसके थ्रू हुआ, चार्ज के थ्रू हुआ. ये उसका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस हियर, वर्क डन बाय चार्ज. तो उस पर लिखेंगे कैसे है फॉर्मूला यहाँ पे, ओके. वी नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करता है बोला मैं, वी, लेटर वी. पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय द लेटर V. Okay, so V is equal to W by Q. Clear? What is W here now? Work. W is nothing but a work. What is Q means here now? Already we studied charge. Clear? And what is V means here? Potential difference. Clear? V equal to W by Q. Potential difference is equal to nothing but work by charge. Clear? Understood this one? This is a formula. छोटा सा derivation, छोटा सा formula. What is the formula potential difference? Nothing but V equal to W by Q. Based on this, numericals are there, problems are there. Okay, when we will do the problem, I'll explain you how to substitute the value in this. V equal to W by Q. Clear? So here potential difference. Now next, these points are very very important here. No, okay, very important. Okay, potential difference. PD. What is PD means here? Potential difference. Remember here, PD means potential difference.
clear, and it is denoted by V, clear. So potential difference is measured by measured in volts, voltage, ठीक है, volt, ठीक है ना, volt, and V. That's the reason the letter V we have given to potential difference. So potential difference is nothing, is measured in the volts, voltage, उसमें मेजर किया जाता है, ठीक है ना. मेजरमेंट यूनिट है एक, वोल्ट मतलब ये कितने वोल्ट का बल्ब है, बोलते हैं ना कितने वोल्ट का बल्ब है, 0 वोल्ट्स का है, वोल्ट का है, 20 वोल्ट्स का है, 30 वोल्ट्स का है, वोल्टेज. Okay, telling the voltage of the bulb, voltage of the electrical appliances, whatever may be here. It is so there we can say that potential difference is measured in the volts. Clear? The next one, work done. Okay, work done. Work done is measured. Work done is measured in joules. Joules measurement तो मालूम ही होंगे, छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना. Joule, clear. And what is the symbol of joule? J, clear. वर्क डन कितना हुआ मालूम करने के लिए किस में मेजरमेंट यूनिट क्या है उसका, joules, clear. Now charge. Okay, next one is a charge, clear. Charge is measured. Charge is measured. Charge is measured in coulombs. coulombs क्या है, हम पढ़ ली है ना. व्हाट इज coulombs? coulombs नथिंग बट C, coulombs, ठीक है. ये क्लियर पॉइंट्स है. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्ड बाय वोल्ट. वर्क डन इज मेजर्ड बाय joules. चार्ज इज मेजर्ड बाय coulombs, क्लियर. सो 1 वोल्ट, लिसन केयरफुली, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट चार्ज, यहाँ पे उसका वोल्ट बता रहे, एनर्जी बता रहे. 1 वोल्ट is equal to, okay, 1 joule, okay, 1 joule by 1 coulomb. ये उसका फॉर्मूला है, 1 coulomb, क्लियर. 1 वोल्ट इक्वल टू 1 joule by 1 coulomb, क्लियर. सो इसको कैसे लिख सकते हैं, एब्रीविएशन के हिसाब से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1V, क्लियर, इज इक्वल टू 1, ओके, 1J by 1C, क्लियर. 1 वोल्ट अगर मालूम करना है वोल्ट में तो कैसे मेजरमेंट लेंगे, उसका डेरिवेशन क्या है, 1 joule by 1 coulomb. 1 volt equal to 1 joule by coulomb, and these are the measurement units. These are all the measurement units here, clear. Next one, hence 1 volt is amount, okay, amount of potential difference, amount of potential difference. 1 volt is the amount of potential difference, produced, okay, produced when 1 joule of work is done, okay. To move, किसको मूव कर रहे हैं यहाँ पे, to move 1 coulomb, okay, 1 coulomb of charge, clear. From one point to another point, from one point to another in a circuit or in an electric circuit. ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है. सो क्या बोलेंगे यहाँ पे हेंस 1 वोल्ट अगर मेजर करना है तो इट इज अमाउंट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस 1 joule, okay, वर्क इज डन टू मूव द 1 coulomb ऑफ ए चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर पॉइंट. ये 1 point टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हम उसको एनर्जी दे देंगे, यहाँ पे वोल्ट दे देंगे, कितना वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, कितना एनर्जी वी आर गिविंग हियर, 1.5. ये शेल का एनर्जी 1.5 है, ओके. कैन यू सी हियर 1.5, कैन यू सी, ओके, 1.5, दिस इज अ वोल्ट. So if I am giving the 1.5 volt
energy here, there is a potential difference moving from one point to, after moving here the second point in a circuit, clear. So the 1 volt in a amount of potential difference produced when a 1 joule of a work is done to move 1 coulomb of charge. यहाँ से यहाँ एक चार्ज मूव हो रहा, 1 coulomb मूव हो रहा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ के ख़त्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना. सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, बट दैट एक्टिविटी कैरीज 6 marks. Long answer. That activity will do. Okay. Activity totally depend upon the electrical potential difference. Clear? So electric potential difference. ठीक है. So small. Suppose it is an activity, you know, which carries 6 marks. Important one. Okay. How to demonstrate? How to show the potential difference with the help of one activity? Clear? Carries 6 marks here. So suppose question is like that. Suppose if we take, okay, suppose we take, okay, 2 water tanks, and placed okay at the same level, okay, and okay, same level, and fill them with water clear. And we, okay, then we have to connect here now. Okay, we have to connect both the tank, okay, both the tanks with a tube, okay. So what happens here, listen carefully. एक डायग्राम है, ओके, एक टैंक ले लिया हम यहाँ पे एक टैंक ले लिया, एक वाटर टैंक ले लिया. Here also we have taken one tank, 2 tanks of same level, एक ही लेवल के 2 टैंक है ना. एंड फॉर दिस टैंक, ये टैंक पे क्या करें हम, इसको एक ट्यूब भी ज्वाइन करा दिया. यहाँ पे एक ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब, दोनों टैंक के बीच में एक ट्यूब भी है यहाँ पे, ठीक है. ये टैंक 1, टैंक ए, टैंक बी, ठीक है ना. देन अभी यहाँ पे वाटर लेवल रख रहे हैं यहाँ पे हम, ये एक वाटर लेवल है, यहाँ पे वाटर फिल कर रहे हैं दोनों में इक्वल लेवल. ये लेवल ऑफ वाटर है, ये लेवल ऑफ वाटर है यहाँ पे, ठीक है. ये क्या है यहाँ पे, ये लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर, ठीक है. टैंक है, टैंक भी, दोनों में वाटर लेवल यहाँ पे सेम रख दिया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है. अभी देखो, सपोज क्या लिखे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, सपोज इफ यू टेक, देखिए 2 water tanks placed in the same level and they fill the water, okay, fill them with the water. We have to connect both the tanks with the tube, both the tanks with the tube. अब ये क्वेश्चन है, does the water flow from one tank to another tank? वाटर फ्लो हो सकता, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे वाटर रखे यहाँ पे. सो ये टैंक में से ये टैंक पे वाटर फ्लो हो सकता, या ये टैंक में से ये टैंक पे वाटर फ्लो होता, ओके, होता. डज द वाटर फ्लो फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक? सो आंसर विल बी नो. Okay, there is a no answer here. Why? Because there is a no water pressure at all. Potential difference is not there. दोनों में वाटर प्रेशर है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों वाटर क्वांटिटी इक्वल है, दोनों का लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक इक्वल है, दोनों का इक्वल है, तो मूव होता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना. दोनों मूव कर ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है. लेकिन दूसरा कंडीशन, और एक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है ना. फिर एक टैंक ले लें, यहाँ पे सेम टैंक है,
और एक डायग्राम उतार रहा हूँ यहाँ पे। ये 2 टैंक, ठीक है। यहाँ पे भी ट्यूब लगा दिया, ट्यूब ऑलरेडी है यहाँ पे। सो दिस टैंक 1 एंड टैंक 2, टैंक ए, टैंक बी, टैंक बी, ठीक है ना। सेकेंड उसमें वाटर क्वांटिटी रेस कर दी। सपोज इमेजिन करो वाटर यहाँ तक रख दिया, ओके, लेवल ऑफ वाटर इज रेज्ड हियर ना, ओके, इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे कहाँ था, यहाँ तक ही था ना वाटर लेवल, शुरू में देखो लेवल तो यहाँ पर ही था, दिस इज लेवल ऑफ वाटर, दिस इज लेवल ऑफ वाटर सेकेंड एक्टिविटी में, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में दोनों इक्वल था, ओके, द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, सो वी कांट सी एनी पोटेंशियल डिफरेंट। बट इन द सेकंड केस, इन द सेकंड कंडीशन, लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज, यहाँ तक है वाटर लेवल, ठीक है। देन व्हाट हैपन हियर, द पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट्स, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे है ना, डेफिनेटली बढ़ गया यहाँ पे, सिंस द टैंक ए में वाटर लेवल ज़्यादा है ना, since the tank A higher level of water, so the water will flow from tank A to tank B। यहाँ से water flow होना शुरू हो जाता टैंक A से टैंक B से, क्योंकि वाटर यहाँ पे फुल है, यहाँ पे टैंक या वाटर क्वांटिटी लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे कम था, तो जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे फिल करे, ये मूव होना शुरू हो जाता, इट कंटिन्यूस मूव, कब तक मूव होगा यहाँ पे, तब तक ये 2 इक्वल नहीं हो जाएंगे। जब ये 2 इक्वल हो जाएंगे, ये 2 की तरह, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फिर से खत्म हो जाएगा। Hope you understood this one, okay. Here we are increase the level of the water here. Once the level of the water is increased here, now pressure definitely increased, because due to that pressure level in the water here, that the water will move from tank A to tank B. The moment you can see clearly, because of what? Because of potential difference. Clear? Understood both here. Other diagram also we can show you. This is second activity, okay. Second condition. Third condition now. Same thing. Third condition. Same 2 tanks, clear, same 2 tanks, okay. Again we kept the tube, कनेक्शन दे दिए यहाँ पे ट्यूब, यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला मैं, यहाँ पे प्रेशर हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे PD क्रिएट हो गया, क्लियर, क्योंकि वाटर क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स, प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज ड्यू टू दैट प्रेशर वाटर फ्रॉम टैंक A passes to the tank B। When it is passes here now, a time comes both the water level will be equal again. So imagine in this condition, both the water level are same here now once again. Third one, this is the third condition. Third, this is second. Clear? ये third condition. अभी दोनों का water level क्या है, फिर से एक जैसा हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मालूम, यहाँ पे हम एक apparatus यूज़ कर रहे हैं, ओके, एक piston यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा piston, यहाँ पे पिस्टन, एक ग्लास ट्यूब है यहाँ पे जो कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है यहाँ पे, एक छोटा सा वाल्व लगा दिया यहाँ पे, ये वाल्व है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन तो देखिए होंगे, दिस इज अ पिस्टन, यू कैन टू एंड फ्रो, यू कैन डू टू पुश एनीथिंग, विल यूज़ द पिस्टन, ओके। ऑयल वगैरह डब्बे में से निकालने के लिए हम पिस्टन यूज़ करते हैं, दिस इज पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन रख दिया, यहाँ पे पानी भर दिया, यहाँ पे लगाने से पहले यहाँ पे पानी रख दिया, अमाउंट ऑफ पानी यहाँ पे भर दिया, वाटर वी केप्ट हियर, दिस वन ऑफ द एपरेचर्स, नाउ लेवल तो सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पिस्टन के थ्रू हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे, ये एपरेटस पे, एक्सटर्नली पिस्टन के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने से ये वाल्व यहाँ पे खोल दे रहे हैं, वी आर ओपनिंग द वॉल हियर, एक बार वाल्व यहाँ पे खोल दे, ये वाटर यहाँ पे जाना शुरू हो जाता है अंदर, यहाँ का जितना ट्यूब में पानी है, एक क्वांटिटी ऑफ पानी है, यहाँ पे जाना शुरू, जैसा पानी इसके अंदर शुरू हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन दिस, इंक्रीज हो गया ना यहाँ पे, डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि एक्सटर्नल पावर दिया, जब ये वाटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या पे हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आ गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आ गया, फिर ये प्रेशर बढ़ने के थ्रू ये वाटर यहाँ से फिर यहाँ इस ये टैंक में आना शुरू हो जाता, टैंक B टू टैंक A। ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम जहाँ दे रहे हैं ना, यहाँ पे पानी अंदर, यहाँ से अंदर ले रहे पानी, वो एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट EMF, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर, व्हाट इज इट कॉल्ड हियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है, ये पिस्टन, दिस इज द पिस्टन, दिस इज द वाल्व,
Okay, this is the tube, test tube here now. Clear, understood? Hope you understood. Once again I'll tell you. 2 tanks we have taken here now. Okay, in both we have filled the water. Water level are same. In the first condition, both the water level are same. So, and one tube also connect to both the tanks. So you can't see movement of water from tank A to tank B. Why? Because there is no any pressure of water. You can't see any potential difference here now, because level of water is same here. So you can't see any pressure here. So there is no movement of water at all here. So no. But here it is yes. Why? Because here the quantity of water we have increased here now. So definitely potential difference creates here. Pressure बढ़ जा रहा, pressure increases here. Due to the pressure here, the water from tank A is moved to the tank B. Okay, till both the level of the water will be equal again. Clear? This is the second condition. So here the water can move once again. So it is yes. Next one, the question, the second question, what here now? If we increase high amount of water here in the tank, so from one tank to another tank, the water will move? Yes, that is the yes answer here. Here no. Now the third condition here now, when the water is moving from, in the second condition when the water move from here, okay, till what time it move, you know, till both the level of water in both the tank will become equal. When become equal, then it stops. There will be, you can't find any potential difference at all, you know. कोई potential difference यहाँ पे दिखाई नहीं देता. Same tank here, same thing I have drawn here now. Here, but we are giving the external force. External force I am giving to push the water, to push the water, some amount of water I am pushing into the tank here. Tank B. This is a tank B. This is a tank A. Clear? Here I am pushing some water here now. Okay, through the piston. Okay, I am pushing some water through the piston. So external force I am applying to it. So that external force is nothing but it is said to be as a EMF, electromotive force. Clear? What does it call as here? Electromotive force. So one point you can write here. Okay, that due to cause of EMF, electromotive force. Okay, the potential difference create. Clear? This point is very important because we are giving the external energy to it, external force we are giving to it to push this water in the test tube. जितना भी पानी ये test tube में है ना, ये सारा पानी इसके अंदर चला गया क्योंकि valve यहाँ पे open कर दिया. You open the valve here, so it is directly moving into this. Okay, when the water is movement taking place from here, how it is moving here? Because of the external force, and that force is said to be as the electromotive force. When that water quantity increase here, then definitely the potential difference create here, and once it is created here, the quantity of level of water is increased here. See, it is increased here, level of water here. So from this tank, the water slowly transfer into this tank. This is called potential difference. Clear? Thank you.